एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ किंगडम कम डिलीवरेंस। एंड आज मैं फिर से खेल रहा हूँ किंगडम कम डिलीवरेंस। आज डीएलसी करेंगे भाई मैप मेरा ऑलमोस्ट मैंने सारा ही क्लियर कर दिया जो मुझे करना था। ट्रेजर हंटिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो भाई सारी क्वेस्ट वगैरह हो चुकी हैं, बस साइड क्वेस्ट और बस ये मेन क्वेस्ट और ये डीएलसीज ही बची है मेरी। सब आराम से खेलते रहूँगा, हो जाएगी ये भी। चेक द मैप मैन, सब हो गया। वो रिपीटेबल क्वेस्ट है, वो मेन क्वेस्ट है। I did it! I did it! ओके भाई लोग, अब मैं स्ट्रीम चालू कर रहा हूँ, सो आ जाओ जिसको आना है। मैं अब गेम स्टार्ट करता। सर रैडजिक से बोल के डीएलसी करता। बैंड ऑफ बास्टर्ड्स पहले करता क्योंकि वो पहले करनी है, वो पहली करनी चाहिए। ओके जा रहा हूँ। ओके तो सर हैंड्स की भी डीएलसी दिखा रहा है और पहले चले गए बैंड ऑफ बास्टर्ड्स करने। ठीक है, सर रैडजिक कहाँ पर है? God be with you, lad. What can I do for you? भाई ये सवाल तो ने बहुत बार पूछा एनपीसी से। हाउस लाइफ इन रैटे, व्हाट काइंड ऑफ लॉर्ड इज सर हानुश?
answer me. कोई ना, अभी पैसे कमाने पे फोकस करता मैं, तो उधर घूमने की जगह सर रेड से कभी बाहर नहीं आ रहे हैं तो I've got something for you. I hope you won't need them, but just in case. Thank you. Wouldn't you like to take a stroll somewhere? I'd love to. See you again sometime. Yes. Come by again. God save me. I hear you're able to open locks without a key. Will you teach me how? Certainly. I want to achieve mastery. You can't become a master overnight. You have to know almost everything before trying to achieve mastery. Well, I'll think it over. Good luck then. Ow! Watch where you're going, you lady! You nearly killed me! Made back the dust. My respects to you. Let's fight. You put up quite a show last time, lad. You want to try again, do you?
फिर वही बकचोदी। क्या बकचोदी भाई? अबे कल तुम आए का ही नहीं भाई। कल इतना मेन मिशन किया मैंने बैठ के। कल पूरा दिन मैंने मेन मिशन ही किया। वैसे तुम्हें एक चीज बतानी है, शायद तुम खुश हो जाओगे देख के। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुम बहुत खुश हो जाओगे देख के। कुछ नोटिस किए? हेलो लियोन, वेलकम। मेरी सारी साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो गई इस गेम की। अब बस मेन स्टोरी एंड डीएलसी बचा है, और उस मेन स्टोरी में जो साइड मिशंस कनेक्टेड आते हैं इंटरकनेक्टेड, बस वही वाले कर रहा हूँ। बाकी मैं ट्रेजर हंटिंग वाला नहीं करने वाला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। पैसे कमाने के लिए मैं दूसरे तरीके यूज़ कर रहा हूँ जो कि काम आ रहे। सो अब तुम्हें मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम में मेरी मेन स्टोरी ही देखने मिलेगी। कर दिया भाई खत्म सीजन 2। भाई क्या 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 किए? शूट की डू नथिंग? व्हाट डिड यू चूज? बाकी भाई मेरा तो अब ये गेम में पेस बन गई है भाई। सब कुछ कर ही लिया है साइड का जो मुझे करना था। अब तो सिर्फ मेन स्टोरी है, वही करूँगा। केन को मरने दिया, जेन को मरने दिया। ओके, मैंने शूट कर दिया था भाई केनी को। एनीवेज नॉट इम्प्रेसिव, मैंने 3 दिनों में ख़त्म करी थी। ये देखो भाई, इसको देखो भाई। ये चीटिंग करने वाले भाई कह रहे हैं कि ईमानदारी वालों को वो कर रहे। 3 दिन में रश मारने वाले भाई हमको बोलेंगे अब आके। भाई वो हैवी फ्यूरी तो ऐसे ही बदनाम है रश करने के लिए। वो कम से कम वो भी ढंग से खेलता है समझ के। बार द वे गॉडफादर देख ली? नहीं यार अभी नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि अभी सोप्रानोस कंप्लीट किया ना। मैं थोड़ा सोप्रानोस के एडिट्स और उसमें अभी इंडल्ज हूँ। मैं जब कोई शो का कंप्लीट करता ना थोड़ा रुक के देखता हूँ, एकदम से मैं नहीं लगता तुरंत। कैनी पागल हो गया था, वही तो मेरे को उस टाइम वो डिसीजन बेटर लगा इसीलिए। God be with you, lad. What can I do for you? ओपन वर्ल्ड गेम्स आप ही ये सब अच्छे से खेलना चाहिए, एक्सप्लोर साइड को सब। वही तो मैं कह रहा हूँ, ली अच्छा हैंडल करता था कैनी को एंगर इश्यूज में। वही मेरी क्लास के बच्चों ने गलती से रेजिडेंट ईवल सुन लिया, पागल हो होंगे। Sir, can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Plymouth Slavins, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shambles these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pegstone, let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province.
simply don't have the men. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Excuse me for being so bold. There's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band. You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide. But really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. अब रोज स्कूल आकर आरी की ग्लेजिंग करते हैं। मैंने पूछा कौन सी आरी खिली है, बोल रहा है आरी 8। मैंने पूछा स्टोरी बताओ, कॉज आई रियली डोंट नो, आई आस्क्ड जेन्युइनली आफ्टर यू नो व्हाट वाज द रिएक्शन। क्या क्या था रिएक्शन? Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. Sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line. और इसलिए उसे नहीं पता था इफ यू आर स्टिल वंडरिंग। हाँ तो उसने झूठी बोला होगा, उसने जहाँ साथ 1-2 वीडियो देखी होंगी और उसे लगा उसे पता है। I saved him from the hangman. Oh, sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. All right, I'll go and report to it. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. I will, sir. Thanks. God be with you. Band of Bastards DLC started. लेट्स गो। भाई ये BBS i9 सैंटी पे खेलना क्या शुरू कर रहा है, सारे पागल हो गए हैं भाई। और भी बहुत, मैंने तो जितने स्ट्रीमर्स को फॉलो किया ना उनमें से भी कईयों ने खेला। लाइक फर्स्ट प्ले थ्रू का सेकंड प्ले थ्रू किया था, वो मैंने ही नहीं किया भाई इंसैनिटी, क्योंकि भाई मेरी फटती है RDM से, मैंने बहुत बार बताया है। मैंने भाई वो गेम 2 बार कंप्लीट कर दिया है, वैसे ऑफलाइन 1 बार और खेल लिया मैंने, बट इजी पर खेला। मतलब उसने खेली थी बट जस्ट यू नो ग्लेज डिड नॉट कंप्लीटेड इट। ऑफ कोर्स ही डजंट नो द स्टोरी। अब आप कंप्लीट नहीं करोगे स्टोरी कहाँ ही पता रहेगी। तुमने DLCs वगैरह भी नहीं खेले थे ना आई थिंक, क्योंकि तुमने 3 दिन में कंप्लीट किया है तो DLC नहीं होंगे। क्योंकि जो बाकी स्ट्रीमर जिनको मैंने देखा ना, जिन्होंने 10-12 दिन में ये गेम कंप्लीट किया है काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश के बाद भी, उनका भी कई चीज़ें रह गई थी साइड क्वेस्ट में, बाकी DLC उन्होंने भी नहीं खेली थी, उनके पास थी नहीं। और विंटर DLC तो ये गेम और लंबी है, बट ज़्यादा लंबी नहीं है इसकी DLC, 1-2 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा हर एक DLC में। लाइक दैट 2030 में, अरे भाई उसमें घंटा कुछ पता चलेगा भाई। उस गेम का मेन प्लॉट ही एकदम एंड में रिवील होता है। रेजिडेंट इविल 8 तुमने अगर खेला हो तो तुमको पता होगा। मैं वैसे बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जिसने नहीं खेला उसको स्पॉइल हो जाएगा, बट भाई वो बहुत तगड़ा रिवील था।
for Sukuno? Sukuno? Baron Rickfold. Isn't this his camp? अरे बोल ना. You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, so Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm JJ, and this here fella, we call him Stern. See why? What's up? Cat got his tongue. No, more like the dog got it. The executioner's dog. And the executioner ripped it out of him. अच्छा, इसका पास टंग नहीं है. Introduce you to the other fellas and the chief. अभी पढ़ता तो नहीं चैट ये कट सीन के बाद. These here are the Bearway brothers. Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though, when their blood is up. It ain't a pretty sight. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. Trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Sir? मैंने यार नहीं खेली आज तक, बस आज डाउनलोड करके ट्राई करी थी. Lord Coburn? It's about time lads have got round to us. We need someone who knows their way around these parts. Move off with the bowing and curtsy. Don't have time for the war here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. Well, I went last time. You'll go next time, young Draper pup. Get your ass moving. Small's brown. You put a map for a pile of shit. You think you would back to it? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. As I said to Radzig, don't carry any dead weight. We find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. They still end up in one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. No problem, Chief. हाँ, थेरेसा के साथ जो घूमने जाते हैं वो डीएलसी होती है. थेरेसा के साथ जो खेलते हैं वो डीएलसी होती है, घूमने जाने वाली नहीं. वो तो एक्टिविटी टाइप ज़्यादा है, मतलब जैसे डेट की तरह तुम घूमने जा रहे हो. बस उसकी एक क्वेस्ट थी बस साइड वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है. क्योंकि ऑलमोस्ट हर नियर टू एंड लाइक 40% लेफ्ट टेक केयर 20 days आई थिंक सो. आई डोंट नो व्हाट यू डिड टुमारो, जस्ट गेसिंग स्टेफन. What's the matter? Lost your balls? Well landed. I'll squash you like the louse you are.
Marka. What's up? Shit yourself. एपिक वालों की माँ का भरोसा। बीसी एपिक वालों से ज्यादा तो स्टीम गिव अवे कर देता है आजकल। क्या हो गया अब? क्या कौन सा जाटू गेम दिया इस बार इन्होंने? You're gonna cry now. What's going on there? You're dead. What's that? Curse it. Give up. Yeah! ये हार नहीं मान रहा है। हाँ, तुम ही मरोगे। सॉरी ब्रो। You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. जीता भाई मैं। Sir Kuno, can you tell me something about yourself? Drop the sir. That title brought me nothing but grief. What do you want to know?
Sir Radzig told me the Rickvold family lost its wealth. How did that happen? There's all sorts of ways to become impoverished. Nothing easy, especially when your father's a fool and your mother's mad as a bat. Oh, It's a long, twisted story. We took our name from Rickvald Castle. That actually belonged to the convent of the Poor Clares in Tynants. My father only leased it. You see, he knew the abbess there since they were young. Knew her very. There was even talk that she only joined the order because her family wouldn't let her marry him. Anyway, whether he was fucking her right there in the convent, or he just took a lot of interest in scripture, he spent an awful lot of time in Tynants. मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, उसमें वो टॉप 5 गेम्स बता रहा था विद बेस्ट साइड क्वेस्ट। कौन कौन सी बताया? nobles can be very devout sometimes. Not my old man. He cursed like a tanner's hand. More than once, he threatened to take a whip to our parish priest. Anyway, my mother never had strong nerves. Truth be told, her sanity was always shaky. Pa's escapades drove her cuckoo entirely. Then, one frosty December morning, I was woken by screaming and smoke. I looked out the window. I saw my mother there, in the courtyard, wreathed in flames. Behind her, the stables, the farm buildings and the tower were burning too. And she just stood there, shrieking with laughter. Christ, sounds like a scene straight out of hell. Hellish it was, I can tell you. Me and my sister Adela, and a few servants managed to get out before the whole place went up. I couldn't get to my father. Or my little brother. That was only 7. My sister and I were left destitute after the fire. Then my cousin, Adam of Dredwich, took us into his castle. A few weeks later, he offered to buy what was left of our estates and sell me a small fortress near Kovnik. It was a great relief. We suddenly had some hope of a future again. So I told my sister about it. And it was the biggest mistake of my life. A week later, the two of them announced to me they were getting married. All that was left of our estates, lands, woods, villages, Adela was to get it all as a dowry. But surely that was for you to decide. You were the head of the family, right? Aye. Only I barely had 17 years under my belt, and I just lost everything. Of course, I argued with them, and that was the only excuse they needed to kick me out of Trevich too. That's pretty harsh. You're telling me? Well, I'm not complaining. As my pa always used to say, if you could turn your hand to something, you'll never be lost. I doubt it ever crossed his mind how often I remember those words. Is number 1 was Witcher 3, number 2 was GTA 5, number 3 was KCD 1, number 4 was Skyrim, number 5 was AC Brotherhood, like rated by critics and fans. ब्रदरहुड के मैंने खैर नहीं करे थे साइड क्वेस्ट, उसके मैंने मेन स्टोरी की थी। साइड क्वेस्ट मैंने इसकी 2-3 ही करी थी जो मेरे को दिखी थी। एक जो अच्छी थी एक्चुअली में मुझे लगी, वो पास्ट वास्ट का कुछ सीन था उसमें, मतलब वो एजियो का पास्ट का करके क्वेस्ट थी कुछ। What about your debt to Sir Radzig? How did that come about? A twist of fate, lad. I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. Some trade dispute, I suppose. And I fought under the Schallenberg guns. In the end, the two sides negotiated a truce. And I rode to Colleen with a delegation that was to parlay there. We stopped off at an inn on the way. It was there that I met Radzig Kobyla. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry soul. We spent the whole night drinking together and talking. And in the morning, we set off together with sore heads, but in good temper. Since he was travelling to Colleen, same as I was. Only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burgers had it in for me, since I've been making their lives hell for a good 6 months. On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't even look to me sideways. Then it hit me, my Radzig was there. Colleen is a royal citizen, so he was there to represent the king's interests. I see.
So he was on the other side. That's right. Anyway, they threw me in a dungeon. A few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the Burgers. Only part of the deal was they would give them my head. And I'd surely have ended my days swinging from the town battlements if it hadn't been for Radzig. He liked me, and he could see it was a dirty trick. So he somehow squared things with the city council. Lucky for you. Indeed. I owe my life to Radzig, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. This is the third time. And how could I refuse him? यस बेस्ट कैरेक्टर लगी मुझे तो। वैसे मुझे ब्रदरहुड की स्टोरी घंटा याद है, बट मुझे इतना पता है कि सेजर की माँ का, अरे वो साला बेंचो होता है। I'd like to ask about your men. Ask away. What about the fellow they call Daniel? I've never ridden with a better man, I can tell you. He doesn't say a lot, but for that, he listens all the better. Nothing escapes him. So he scouts for you. Not just that. It's happened more than once. I was closing a deal with someone, and Dangler told me after that he didn't like the smell of the fellow. Nearly every time he was right, and the fellow tried to stab me in the back afterwards. Those Behrman brothers are quite a pair. Indeed they are. There's no more mercy in them than in, well, a bear. If I told them to skewer you on the spot, they'd do it without batting an eyelid. Jesus. Oh, aye. They'd argue first about which one of them got to do the job. But they're as obedient as a huntsman's dogs. Real soldiers. Very reliable. As long as they don't get too drunk. Then there's no keeping them under control. But nobody's perfect. What can you tell me about Stefan? Fletcher, for one thing, he's a very resourceful fellow. How did he come to join your band? Well, let's just say he was in the right place at the right time. You'll find he has quite a knack for that. What exactly happened? Sorry, I'd love to tell you the whole story, but betraying his trust. Oh, you've got me curious. Maybe I should ask him myself. Sure, why not? Well, Fletch does love to converse. डूम्सडे के रिलेटेड आरजी ने कुछ पोस्ट किया है और कुछ ईस्टर एग्स डाले हैं, फोटो डाली है डूम ने विद एग्स। अरे मेरे को किसी ने डिस्कॉर्ड पे भेजी थी, उस पर कह रहे कि शायद टोबी मैगवायर आ रहा है। ये तुम भी यही बताना चाहते? What about that dumb boy? How did he end up with you? Stoke. तुम बताना क्या क्या ईस्टर एग है। Just like that? Aye, just like that. We were riding from Olomouc to a castle past Gladstone when we ran into him and some other wayfarers camping along the way. You know how it goes. We made acquaintance with them, a drink or two. Then we travelled on together. After all, there's safety in numbers. I'm not sure I'd be thinking that if I ran into you lot on the road. We might have done some things I ain't proud of. The wayfarers are sacred even for me. Anyway, our fellow travellers dropped off along the way. One in Mohelnitz, one in Schoenberg, the rest in Gladstone. Except for the stone. He stuck with us the whole way. The fellas kept asking him what he was after. Of course, he never said, but when we were approaching Barsdorf, I ordered the men to get ready. I had some business at the castle, and I didn't want any strangers sticking their noses. Stefan tried to tell him nicely. We just sat there, staring like he was turned to stone. That's when we gave him the name. Then the Behrman brothers tried to get him off his horse. He booted Jan in the face and knocked him out cold. Then he jumped down and fell Petter with one punch. A man who can do that is a man you want on your side. So we kept him. Weren't you worried about having a stranger in your band? Especially one who didn't talk. No, I figured if you can't talk, you can't tell. Besides, I've had worse. बस ऊपर कुछ डिजाइन बने थे, अभी देख कर आता हूँ ऊपर एनालिसिस। ओके भाई। What about Jake? Jake, that boy will be the death of him. You've got to be tough on him, or he's good for nothing. I'm fond of him, in a way. Like her son? I wouldn't go that far. But I've no family of my own. And
like those other cutthroats. He seems to me like a good lad. You're pretty hard on him, eh? And the others keep him on his toes, too. Boy needs a firm hand. I was like him once. I got the same too. If we let him be, we'd end up with a third bear man. Who want that? True. 2 is more than enough. Should we ride out? You're keen, aren't you? We're not riding anywhere in the dark. Come during daylight hours. Alright. You can sleep here in the camp if you want. There's room enough. And you ought to get better acquainted with the fellas. Can you tell me something about yourself? What do you want to know? Why do they call you Dandy? Because Kuno found me dangling on the end of a rope. So he saved you from execution? देख लिया, अब बताओ। By the time I was squire to the Lord of Buzzets, there was a proper night for you, full of ideals and honour. I looked up to him as a hero. Then in one skirmish he was killed, and the foe took me captive. He stood me on a shaky wooden cross with my hands tied behind my back and a noose around my neck, for amusement. And they rode off laughing. Well, how long were you stuck there? I couldn't tell you. Hours, maybe days. In the end, everything started going black. I could feel the devil pulling me down by the legs. Jesus! How on earth did you survive? I didn't. When Kuno found me, he says I was dead as a doornail. They cut me down, took the rope off me, and someone gave me a kick and I coughed and came back to life. Sort of. ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टर्स बता रहा है जो कि डूम्सडे में मरेंगे, लाइक थंडर बोल्ट्स वाला और थॉर का, और ये एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है रियल कॉमिक्स से, सो दिस माइट बी ट्रू। ओके और रियल कॉमिक्स में थॉर मरता है और कुछ अर्थ पर प्रेजेंट सुपर हीरो जिनको ये थंडरबोल्ट से रिप्लेस करेंगे। Clear off. Why are you making me go away? बाद में मैंने इतना गंदा स्पॉटर डेडिकेटेड डूम्सडे का था, बाद में मैंने इतना गंदा स्पॉटर दे दिया डूम्सडे का थॉर डेड वाला। अब देखो मूवी में क्या होता है भाई, अभी कंफर्म थोड़ी है मूवी में भी सेम ही होगा, जरूरी नहीं है मूवी में भी सेम चीज़ हो। जैसे मैंने सुना है कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का नेचुरल वेब नहीं होते, वो अपने शूटर्स बनाता है, कुछ ऐसा लोग बता रहे थे, लेकिन टोबी मैगवायर में अलग था, वो नेचुरल वेब निकलते उसके अपने। अब तो टॉम का भी नेचुरल निकलना शुरू हो गया।
थॉर तो डेड ही होगा। अब वो मूवी आएगी तब पता चलेगा, अभी क्या ही अजम्पशन लगाओगे। ये तो लिख लिख कर ले लो, एंडिस मल्टीमर सागा के बाद कॉस्मिक सागा शुरू होगा जो कि बेस्ट सागा है, बेटर देन इवन अल्ट्रा लोकी, थानोस एंड डूम। बट व्हाई विल इट बी बेटर देन इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम? आई डोंट थिंक, मे बी, बहुत मुश्किल है। मार्वल में भी वो बात नहीं बची ना, मार्वल वाले भी बना नहीं पा रहे उतना, उन्हें इसलिए अपने पुराने एक्टर वापस लाने पड़े। Tell me something about yourself. What do you want to know? How did you and Jan end up with Kuno? Me and my brother been riding with coinmen since we was little. This was just another mercenary band for us. But Kuno seemed like a decent kind of fella who'd treat us fair. जो टीजर आया है थॉर वाला, उसके बाद वो डूम से मिलेगा और डूम उसे मार देगा। अच्छा, मतलब तुम कॉमिक की स्टोरी के हिसाब से तुम जो बता रहे हो तो चलो समझ गया मैं। Should we ride out? Aye, we ought to set out on patrol about now. Hope you've got your kit ready and whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Salapesh and Merhayed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhayed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there, From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. Feeling in my bones. Mount up and let's go. sure. Chief. बस सीक्रेट वॉर्स में सब वापस आएंगे एक्टर्स लाइक ऑल ऑफ देम आरडीजे, तो थॉर टू लोकी और मे बी इवन टी चाला वाला ब्लैक पैंथर। देखते हैं फिर भाई यार। एक पता है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेट पे बात नहीं बनेगी यार। नो वे होम भाई तुम देखोगे ना, लोग बहुत हाइप थे, लोगों को पसंद भी आई एक बार, लेकिन वो मूवी अब लोग जब देखते हैं ना तो लोग ये चीज़ बताते हैं, हर कोई कहता है कि मतलब वो मूवी वन टाइम वॉच ही थी, वो इन जनरल बहुत तगड़ी मूवी नहीं है। तो ये टू एन एक्सटेंट सच भी है, वो वन टाइम अच्छा वॉच है, वो मोर ऑफ अ फेस्टिवल है दैन अ प्रॉपर मूवी। Indeed, brother. You know what I like? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Like around the hill. भाई क्या लग रहा है गेम। मेन पता है मार्वल का यही है कि अभी वो नॉस्टैल्जिया बेटी कर रहे हैं, जो कि पता नहीं ये कब तक काम करे। ये लोग नॉस्टैल्जिया बेट से आते हैं ना, एक्चुअल में ढंग के कुछ करना पड़ेगा। डूम्सडे में बेसिकली सब एवेंजर्स खत्म, पूरे मल्टीवर्स खत्म एंड डूम अपना एक बैटल वॉर वर्ल्ड बनाएगा। रियल वॉर विल बी सीक्रेट वॉर्स। मुझे तो बस एक मॉलिक्यूल में मान लो, मुझे को मॉलिक्यूल मैन बता दो। आई थिंक सो जेसी पिंक मैन। क्या मतलब जेसी पिंक मैन विल डिटर्मिन इन सीक्रेट वॉर्स?
Darcy? What about the rest of you? I don't know what Fletcher's like. There's plenty of doors and switches nearby. Not to mention it falls in a tavern. We don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. Always makes me uneasy. Jakey? They go to homeworks in cruel sizes. Alright, appreciate your honesty, lad. एक्चुअली इसको आयरन मैन के डेड नहीं करना चाहिए था एंड गेम में। नहीं नहीं, वो उन्होंने ठीक किया डेड करके। To the spoils. एंडिंग अच्छी थी। It's always been, but no person That was a good ending for him, on the battlefield. for his character arc. It's for. बस गलती इन्होंने ये कर दी है ना Rule. You can कि लोग मूवीज उसके बाद से अच्छी नहीं बना पा रहे हैं। प्रॉब्लम but nothing. आरडीजी को वापस लाना भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों से मूवी नहीं बन रही है। Trust in your leader. You choose by your ये लोग बस own भाई free will. नॉस्टैल्जिया पे ही चला पा रहे हैं। Get that. Chief, there's something going on over there. Let's go. Behind me. Keep your eyes peeled. Yeah. What do you think we can expect this time, fellas? Russia. Come in and piss me off a bit. Nice chunk of meat. Count on me to just fall out. भाई और मेरे को आरडीआर 2 का मिशन याद आता है। Enough is already watching, brother. Never gets to see the action close up. What about you, Dangler? What do you expect to find? Utility and suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? What do you think? सेव मार लेता हूँ एक बार भाई, इतना लंबा चल के आया हूँ। मे बी आई एम गेसिंग क्योंकि वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, मुझे तुम्हें 5 आवर की डूम्सडे प्लस सीक्रेट वॉर समझानी पड़ेगी। तुम बस ऐसा लोगे पिंक मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकते हैं मार्वल हिस्ट्री में। भाई तुमने जैसी पिंक मैन का ऐसा एग्जांपल दिया है ना भाई, वो ऐसे ही ब्रेकिंग बैड का सेकंड प्रोटैगनिस्ट है, ड्यूट्रोलॉजिस्ट जो भी कहते हैं उसको, मेरे को नहीं आती स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। चलो तुम अभी एक्सप्लेन की चिंता मत करो, मूवी आएगी इस साल एंड में, तब देख लेंगे। Still smouldering. Whoever torched it can't have got very far. This is the moment Henry realizes he can be attacked in his private domicile. Yes, yes, gamer paradise. भाई प्रॉब्लम, भाई ये सब प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि किंग का एक्टर रैपिस्टी बनकर जेल गया था। ओ अरे भाई समझ गया भाई, मैं भी सुना था लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। मैंने भी सुना था ऐसा कुछ न्यूज़, कैंग का एक्टर। हाँ अरे वो सही में गिल्टी प्रूव हुआ था कि ऐसे ही जेल में डाले थे? क्या कोई सीन है? Jesus Christ, what a massacre. जोनाथन मेजर, अच्छा वो एक्टर का नाम है, मेरे को नहीं पता भाई एक्ट्रेस का नाम सब। No signs of resistance. They simply slaughtered them like animals. Looks like it happened fast. They weren't even armed.
Sweetie. ही बीट हिज ओन जीएफ, असॉल्ट किया था। अच्छा, यस, कुछ हरास का केस था लेकिन अब सब सही है, इसीलिए इनको बीच में पूरी यूनिवर्स चेंज करना पड़ा, रियल वाला स्टोरी। अरे यार, समझ गया। रियल स्टोरी, कोई बोलते हैं गिल्टी था, कोई बोलते हैं नहीं, तब क्या पता सच। बीसी में चैट कर रहा था और ये सारे बैठ कर डूम्सडे समझ रहे थे द साइलेंट होकर। अरे नहीं, अभी अचानक से आए हैं एंड इसीलिए उस पर लीगल एक्शन भी हुए, बट आई गेस सेटलमेंट कुछ हुआ, कॉज नाउ इज आउट एंड बॉट इज आउट, बट ज़्यादा जगह काम नहीं कर रहा। इतना पता है कि बस पूरी मार्वल की ऐसी टेसिक मार दी भाई। एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। उसने तो गलत किया ही किया, They can't be all that clever, or they'd have taken the मार्वल को पूरा झेलना पड़ गया। रिकास्टिंग क्यों नहीं करी इन लोगों ने? इतना दुनिया भर के शोज होते हैं वो रिकास्ट करते हैं, इन लोगों ने रिकास्ट क्यों नहीं किया? फिर तो ये कर सकते थे। Kuno will want to know about this. Poor wretch. भाई एक तो ब्लैक एक्टर था, डिड्डी भाई लग रहा था। वेल वैसे ही मार्वल का कौन सा अच्छा काम किया है, वो तो है यार, एंड गेम के बाद से ख़त्म है वो। मार्वल ट्रैक पे आ ही रहा था, लोकी साहिब बनी थी, लेकिन ये कांड ने दूसरे रास्ते पे जाना पड़ा। अगर रिकास्ट करते तो टी चल्ला का ब्लैक पैंथर को भी कर देते। कैंग को एंटमैन से हरवा दिया, वो तो छोड़ो, एटलीस्ट मार्वल कुड हैव किल्ड फ्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम द कास्ट ताकि मूवी में स्टेक्स रहें। और आरडीजे की जगह किलियन मर्फी एज आयरन मैन, वो लोग का कुछ चला नहीं। मल्टीवर्स सागा एंड गेम के बाद कुछ ही मूवीज़ अच्छे पैसा कमाई हैं, सेफ रूट के लिए आरडीजे वाले रास्ते आ गए। इशू तो यह यहाँ से हुआ कि मार्वल के मूवीज़ में स्टेक्स ही हाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या कैरेक्टर ही पेल दिया। नो ब्रो, लोकी एंड शैंग-ची वॉज गुड। लोकी एंड शैंग-ची वॉज गुड, यस। शैंग-ची वैसे मैंने नहीं देखी है, देखूंगा। लोकी मैंने देखी है। नो वे होम भाई देखो, नो वे होम वन टाइम वॉच ही है, वो इतनी कोई अच्छी मूवी नहीं है। इट्स अ फन मूवी फॉर वन टाइम, बट एंड गेम इन्फिनिटी वॉर का लेवल ही अलग है। वो मूवीज इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर है। एक से मार लेता है इधर। सीरीज बड़ी बेकार बनाते हैं, कुछ ही अच्छी थी, इसलिए कुछ मूवीज वर गुड एंड कुछ सीरीज भी अच्छी हैं। शैंग-ची की कॉम्बैट फैट एपिक थी, देखना, अच्छी मूवी ओवरऑल सही है। बट वेल सीक्रेट वॉर्स एंड डूम्सडे से उम्मीद है फ्रैंकली स्पीकिंग वो हिट भी बड़ा अच्छा करेंगी भाई। वो मूवीज होंगी तगड़ी भाई, बट एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जितनी तो नहीं होंगी आई गेस। मुश्किल ही है, शायद हो जाए। अभी वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे ही चला रहे। अशी हल्क देख के मैंने मार्वल छोड़ दिया। मैं तो क्लिक भी नहीं करूँ भाई ऐसे झाड़ू शो पे। ये मेरे को फीमेल वाले शो नहीं पसंद भाई, मेरे को लेडीज नहीं चाहिए। As told, don't get how she Hulk is real. Same. शैंग-ची का डायरेक्टर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कर रहा है। स्पाइडरमैन तो देखो मैं देखने जाऊंगा यार,
मेरे को लग रहा है इट वुड बी अ गुड मूवी। बस मैं चाहूँगा कि इट शुड बी बेटर दैन ऑल द अदर टॉम हॉलैंड मूवीज, क्योंकि टॉम हॉलैंड की तीनों मूवीज में सिर्फ फार फ्रॉम होम ही एक मूवी है जो मतलब इट वॉज अ डिसेंट मूवी। होम कमिंग मुझे सही नहीं लगी, एंड नो वे होम तो भाई वो बेटी है पूरा, वो नॉस्टैल्जिया बेटा, ऐसे कोई खास मूवी नहीं है वो। बट यार सीन ये है ना, ये मार्वल का बस यही चल रहा है भाई कि कोई एक कैरेक्टर ले आओ और उसकी एक हाइप बना दो, बस चल गया। I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that, Chris. It's the House of Zul. Dangerous, not God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. फार फ्रॉम होम वॉज बेस्ट, अच्छी मूवी थी भाई वो मेरे हिसाब से, उसमें विलन भी बढ़िया था। सीक्रेट वॉर्स आई एम गेसिंग इज द बेस्ट मार्वल मूवी ऑफ ऑल टाइम, नॉट लाइक कुड इजीली बीट एंड गेम इफ द मूवी इज मेड राइट। देखते हैं यार बना पाए तो होंगे इन्फिनिटी और एंड गेम से बड़ा वो, बट सीक्रेट वॉर्स ही होगा, एंड अकॉर्डिंग टू सीक्रेट वॉर्स के 2 पार्ट होंगे। ओके What do you know about these Zulus? Family of impoverished nobles. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. What thereafter in Bohemia? No idea. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. Alright. It's always good to have an extra pair of eyes. We'll keep searching here for a while, and then head back to the camp. रिपोर्ट मैं करूंगा सर रैडजिक को, बट मैं सोच रहा हूँ पहले अटैकर्स को ढूंढ निकालूं। एंड अगर कॉमिक से हटके थोड़ा इंस्पिरेशन लेके सीक्रेट वॉर्स का फेथफुल अडेप्टेशन करेंगे तो सीक्रेट वॉर्स बहुत हिट होगी। मे बी कॉज डूम्सडे में बहुत इनकर्शंस एंड उनकी बैक स्टोरी दिखाएंगे। कॉमिक्स वाला तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लाइक फाइट सीन में ओवर मिलियन पीपल कैसे रेंडर करेंगे। हाँ डूम्सडे में ज़्यादा इनकर्जन्स का है लफड़ा होगा, जस्ट लाइक कॉमिक बुक रन टाइम रन्स आउट। तुमने अभी कुछ दिन पहले बताया था ना स्टॉर्मी से कि वो उसको मूवी में उस एकदम कॉमिक एक्यूरेट को मूवी बनाना बहुत मुश्किल है, जितने सारे तगड़ी बैटल हुई है वो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज लिमिटेशन ब्रेक कर देगा भाई, बहुत सारे एडिटर्स की ऐसी तैसी हो जाएगी उनमें। मिलियन पीपल क्यों है, क्यों ही करना है, स्केल डाउन कर देंगे बस, देखते हैं क्या होगा। What a pile of shit. I wonder if they found anything valuable at all. Did you find any tracks? Some, a horse or two. They rode off through the meadow towards dawn. They were walking forward, which is interesting. Towards dawn? Meaning towards the east. Apart from the mountains, there were some men on foot. Well weighed down. You can't move too fast then. No. And what's more, they left a trail of blood. One or more of them might be wounded. Either that, or they dragged off some poor bastard from here. Nice work. Thanks. हाँ ऑब्वियस कॉमिक बुक जैसा करना भी नहीं चाहिए, जस्ट फेथफुल अडेप्शन करो, बाकी अपने हिसाब से स्टोरी लेके जाओ। हाँ
ब्लैक पैंथर को इन्होंने बेस्ट रिप्लेसमेंट दिया है, चाहे कॉमिक्स वाली स्टार्ट भी कर दे सकते भी दिया है, चाहिए तो कॉमिक्स वाली स्टार्ट भी दे सकते। जैसे इन्फिनिटी वॉर थी, बिकॉज कॉमिक्स में तो थैनोस ने स्नैप किया था फिंगर टू इम्प्रेस लेडी डेथ, बट मूवीज में ही डिड कॉज ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्मिक बैलेंस। हाँ, इसलिए तो इतना मीम बनता है कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज थैनोस वाज राइट। बाय द वे, थैनोस विल रिटर्न इन डूम्सडे एज किंग थैनोस। Poor creature. Hunted down like game. मैंने बोला था ईस्ट में ही है। Seems they met some resistance at the farm. What a waste. Well, at least I know which way they went. अभी जा रहा IPL देख कर आता हूँ। ओके भाई। आई गेस किंग थानोस वाला वो इनफेमस सीक्रेट वॉर्स का पैनल ये लोग कैंग द कॉन्करर के साथ करेंगे, विच वुड मेक मच मोर सेंस। देखते हैं भाई क्या होगा। भाई मेरे को तो कॉमिक्स वगैरह का बहुत अच्छा आइडिया है भी नहीं। सेव आई मीन आउट ऑफ द ब्लू करेंगे तो लोग कैंग को भूलने नहीं वाले। सो या उसके साथ करेंगे विच करेंगे, हो सकता है वो पूरा स्पाइन खींचने वाला कांड। भाई अब देखा आएंगे क्या होगा भाई, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो एंड गेम भी आने हैं बहुत समय, एंड गेम बोल रहा, ये डूम्सडे आने में भी टाइम है भाई। अभी ये दिसंबर में तो आएगी, उससे पहले बहुत सारी मूवीज आने वाली। मारा 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 मारा, बहुत सारे हैं। भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मारूंगा मारूंगा, आउट नंबर। Come on. Oh, slave. PIR बहुत गलत डिसीजन था।
पहले रिपोर्ट मारना है, पहले रिपोर्ट करो उसके बाद। भाई वो नहीं हो सकता भाई, वो इतने सारे खड़े हैं, 1v1 1 वर्सेस 10 नहीं होगा। पहले रिपोर्ट करना है फिर डील करना है। देखो रिपोर्ट कर दे, बता देता हूँ। वो 10-10 15-15 हैं भाई, नहीं होगा अकेले वो, कम मेरे को 5-6 टीम चाहिए। God be with you. Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be the worse for you. What was that? The Lord be praised. What brings you to me? Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm in Merriott. Christ! It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. And this is something else, sir. We found a shield there, a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it was saying. You are, sir? Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel, defend your honor. And you know me as French. That's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. Surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing that should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes,
like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal headman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Well, I'd like to hear the whole story, sir, if you would mind. Very well. It began in the first year of King Wenceslas's reign. He sent me to resolve a dispute between the Zulls and a neighbouring house. It concerned land boundaries. The Zulls had refused to accept the ruling of the land court. His Majesty's position was a little shaky after his coronation. So a decision was made in the royal court to take radical action against any dissent in the kingdom. Since the Zull family was defying the king, we were obliged to punish them. Harshly, as the circumstances demanded. The head of the family, Hagen's father, was hanged, the castle razed to the ground and their property confiscated. So, they're out for vengeance. But you acted according to the law. But it were that simple, lad. I was young and didn't realise the repercussions it would bring. For one thing, the king didn't use it to strengthen his position. On the contrary, he took less and less interest in such affairs. How come? Because he realised things would eventually sort themselves out. He promoted me to royal headman, leaving him to pursue other interests. Secondly, my actions essentially created another band of robbers. When you strip a nobleman of his property, you can't expect him to take to begging. And thirdly, I wasn't aware at the time that the other party to the dispute was distantly related to me. Naturally, that made it look like I was acting in self-interest. If I'd known what I know today, I'd have been a lot more circumspect. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Well, I'd like to hear the whole story, sir, if you would mind. Very well. DLC खेल रहा हूँ भाई. Wenceslas's reign. He sent me to resolve a dispute between the Zulls and a neighbouring house. It concerned land boundaries. The Zulls had refused to accept the ruling of the land court. His Majesty's position was a little shaky after his coronation. So a decision was made in the royal court to take radical action against any dissent in the kingdom. Since the Zull family was defying the king, we were obliged to punish them. Harshly, as the circumstances demanded. The head of the family, Hagen's father, was hanged, their castle razed to the ground and their property confiscated. So, they're out for vengeance. But you acted according to the law. But it were that simple, lad. I was young and didn't realise the repercussions it would bring. For one thing, the king didn't use it to strengthen his position. On the contrary, he took less and less interest in such affairs. How come? Because he realised things would eventually sort themselves out. He promoted me to royal headman, leaving him to pursue other interests. Secondly, my actions essentially created another band of robbers. When you strip a nobleman of his property, you can't expect him to take to begging. And thirdly, I wasn't aware at the time that the other party to the dispute was distantly related to me. Naturally, that made it look like I was acting in self-interest. If I'd known what I know today, I'd have been a lot more circumspect. बहनचो इधर गंदा तूफान आया. लाइटिंग गिरा दी आप शायद आसपास. अरे बाप रे बेटा, टॉप पे रहूंगा. कौन सा टॉप? अरे भाई वो जब लड़का लड़की बेड पे होते हैं ना, वैसे. What are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to it? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry.
to ask something about this Sir Hagen. Sure. See you later. वही क्या, यस लॉर्ड वाइड आउट हो रहा था मेरे दिमाग में भी, वही है ये लाइव स्ट्रीम के टॉप चैट में। मुझे भी डाउट हो रहा था कैसे कर पाएगा, कर दिया मैंने उसके साथ जोर जोर से। टॉप ऑफ बॉडी व्हेन अ प्रेशर गेट्स ऑन टॉप ऑफ हिज बॉडी टू मेक देम प्लेजर। बेटा टॉप पे रहेगा वो गांड मैं मारूंगा। सबसाइड जो मेरे अंदर का टोनी सोप्रानो जाग गया है। वो बॉटम पे मरवाएगा। मेरे अंदर एजे जाग चुका है, हट जाओ। अरे एजे की ऐसी तैसी भाई निब्बा ऐसा लड़की के लिए डिप्रेशन में। अरे माँ ये क्या था बे हैं? मेरा घोड़ा कहाँ? मेरा घोड़ा पानी में। भाई वो ये रहा बेटा मिस्टर रोबोट। कब टाइम लगेगा? तुमको पता है ना मेरे तुम कह रहे हो मिस्टर रोबोट, मेरे दोस्त कह रहे हैं वॉकिंग डेड देख लो। मतलब वॉकिंग डेड उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा देखो, उन्होंने कहा ना कि थोड़ा कुछ सीजन्स देख लो जो अच्छे वाले हैं। तो मैं सोचा भाई वॉकिंग डेड ही कर लेता हूँ। मिस्टर रोबोट वैसे भी छोटा है, वो मैं पूरा देख ही लूँगा आराम से। वह जो बढ़िया सीरीज़ है ना वो ऐसे ही पूरी देख लेता हूँ विदाउट अ प्रॉब्लम। उतना टाइम तो तेरे साथ करने पे नहीं लगता। ये देखो अभी सोप्रानोज हुआ है भाई, थोड़ा रिकवर करने दो मुझे। डेडिट्स वगैरह देख रहा हूँ उसके। छोटा तो तेरा भी था, फिर ये मैंने देख लिया अच्छे से। चल मानता है ना कि देने वाला मैं वो लेने वाला तू है, मान गया ना बस। पूरा पागल खत्म एकदम। वाले बैंडिट वाला मेरे को रेडर स्कैम चाहिए यार। आई वुड किल देम फकिंग हेल। बड़ा देने वाला तो मैं हूँ, छोटा दे। इसको देखो भाई, छक्कागिरी वीटो स्पाता फोर जॉनी केक्स वाली हरकतें। वही कद जैसे अपने घोड़े के साथ राइड करना है तो वही करूँगा। द बॉयज आ रही है परसों, मैंने तो एक भी सीजन नहीं देखा।
मैंने तो एक भी सीजन नहीं देखा यार बॉयज का। मेरे को उतना वो है नहीं यार उसमें इंटरेस्ट। दैट्स नॉट माई टाइप ऑफ सीरीज। किसके ऊपर आ रहा है लॉल? सोहाग के ऊपर। द गर्ल्स देख लो इससे अच्छा ऑब्वियसली वो एडमिट है। ये सौभाग्य कौन है? अरे मैं हूँ भाई, मेरे नाम से नहीं पहचान पाए इतने दिन। भाई गर्ल्स देखने मिल जाए भाई मैं तो देख लूंगा भाई। आई एम स्ट्रेट एज फक। नो छक्कागिरी, नो हिजड़ागिरी। भाई वो तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा लॉल। ये जो प्यारा मीठा जो स्ट्रीम कर रहा है उसी का नाम है। तू तो मेरा देखता है हमेशा। हाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। मीठे साढ़े मीठे। अब वो एक छक्के आदमी है। चढ़ने दूँ तब ना। आई एम टाइगर इन बेड। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? छक्कों की बातें। असली छक्का, खूनी छक्का। तो यार वो रेडर्स की लोकेशन निकल गई मेरे हाथ से। मेरे को लगा नहीं था हटा देगा गेम। वो 10-15 थे, मुझे लगा शायद नहीं मार सकता मैं उस टाइम। एंड बुमरा इज अ कैट इन फ्रंट ऑफ मी। इतना बहुत हो रहा है, सब देख रहा हूँ। आप तो हिजड़े हो। हाँ भाई मैं हिजड़ा हूँ भाई, बहुत बड़ा 100%। ताली बजाओ। मेरा फेवरेट हिजड़ा तो ताली बजाता है, बजा लेता है इस। मेरा फेवरेट हिजड़ा जो ताली नहीं बजाता है, बजा लेता है अच्छे से। आज करके हिजड़े ताली नहीं बजाते हैं, ऑन टॉप ऑफ यू लिखते हैं। अबे यार मेरे को उसी वक्त डील कर देना चाहिए था एक कैंप वालों से। अब भाई गायब हो चुके हो। वो रैशनल डिसीजन था भाई। वो 15 बहुत सारे थे ना, मतलब थोड़े ज़्यादा नंबर में थे उनसे एक बार में लड़ने में।
एकदम से सबने हाइपर एग्रेसिव अटैक किया मेरे मुंह पे आके, इसलिए मुझे लगा बाद बाद में शायद कर सकता हूँ, लेकिन नहीं आया ऑप्शन। अरे वो मैप पे मार्कर लगा के दे दे यार, गूगल पे भी तो लंड लोग ना, गाइड वाले कुछ काम के नहीं है। छोड़ो भाई, मिशन पे ही चलता। रुको, हक के आता हूँ, करो करो करो। मेरे को अपनी स्ट्रीम रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी शायद। हाँ,
मिल गया भाई, लेट्स गो। अपनी ही स्ट्रीम पे ढूंढ लिया। अब कैंप खाली है अब की बार। वहाँ क्वेस्ट ख़त्म हो गई ना, तो अब उनका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। नो प्रॉब्लम मैम। Some nice religion. I've been to see Sir Radvic. So how did you take the news? Well, he wasn't exactly happy about it. I can well imagine. I wouldn't want the Sewells plundering my estates either. He wants us to carry on patrolling the area. There's nothing else for it. We'll do that. But it will soon be too dark for patrolling, Henry. Come at first light. Sure, I'll do that. Stefan, can you tell me something about yourself? What is it you want to know, youngster? What do you think about this business with Hagen Zoo? I'd say you
Sir Radzig are very fortunate to have Kuno. He's a master at handling such matters. Is he? Why is that? Dealing with bastards like Hagen's own demands both courage and sharp wit. Not a commonplace combination, but Kuno has both components. I'm curious how you ended up in Kuno's band. You noticed I don't exactly fit in with this pack of felons and renegades. Unfortunately, you can't always choose your company. No, I suppose not. But how did you come to be with them? Oh well, I'd love to tell you, but Kuno insisted we keep that between the two of us. And I'm not one to make it. Oh. But Kuno said it was you who wanted to keep it secret. Really? Are you sure about it? You must have misunderstood it. No, I don't think so. At least... So, where did you live before? What did you do? I used to live in a town. Back there I was doing something very illegal. Now I think of it, maybe it wasn't that different in a way. If you know what I mean. Actually, I have the foggiest idea what you mean. You don't give anything away, do you? Me? I'm an open book, lad. Ask me anything you like and I'll give you an honest answer. Go on. Maybe another time. My head's starting to spin. As you wish. Shame though. There's nothing I enjoy more than rehearsal. सो गया हाँ Can you tell me something about yourself? What do you want to know? What do you think about this business with Hagen Zoo? Hagen Zoo? Who's that? That robber baron who's been pillaging Sir Radzig's estates. Kuno, tell me. He did. Then he says a lot of things. Zoo, Radzig, Sokol and Hinek Krava, Wenceslas, Sigismund. It all goes in one ear and out the other. What do I care? Ride somewhere, kill some fellas, have a drink, and go to sleep. If you're lucky, it won't rain while you're at it. That's all. Can you tell me something about yourself, young? Why not? I haven't read to confession for a while. You and Petter seem very close. As brothers should be, lad. Well, to tell the truth, never have guessed the two of you came from the same mother. Well, we've got the same nar, mate. I ain't got no bar and neither does he. And the same goes for our pa. Probably Satan himself. Oh. I'm a bit confused. You're not actually brothers. Might be. We might not. A band of mercenaries found us in a village, and I was still a baby. Petter hardly would. Laying in the dirt together with us. Their leader took a shine to us for some reason. He took us away, raised us up. Raised us with swords for playthings, and ale for mother's milk. A few years later, he was killed by an assassin. We joined another right away. That's the way it's been ever since, over and over. So you two never have... Oh, A normal life.
risking our necks and killing who they pay us to kill. That's normal for us. Always has been. What do you think about this business with Hagen Zoo? That's a very tricky matter, I can tell you. Them Zulus are well known among us mercenaries. Hagen and his two brothers fought in the Margravian Wars. That's quite a feather to have in their cap. On the other hand, they've got their weaknesses. Like what? They still like to think of themselves as high and mighty lords. Kuna got over them through Christ, and he treats us all like equals. You think Hagen's men have no great love for him? Well, I'd say they're running for his whip more than following his flag. You understand me? Aye. I see what you're getting at. How did you end up in Kuno's band? It's nothing new for me and my brother. We've been fighting for coin since we were old enough to carry swords. बड़ा लंबा DLC है लेकिन कितना लंबा है ये? By the name Kalina. All over Bavaria, Austria. What happened? Did you fall out? Band of bastards. Wanted to come back to Bohemia. You know how it is. When no one understands a word you say, it ain't worth a damn. How did you end up in Kuno's band? खिलाड़ियों में सुनाओ काफी डिसेंट है. We've been fighting for coin since we were old enough to carry swords. Last time we rode with one Lombardi by the name Kalina. All over Bavaria, Austria. What happened? Did you fall out? We just wanted to come back to Bohemia. You know how it is. When no one understands a word you say, it ain't worth a damn. अच्छा लेंथ होना चाहिए. मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है क्योंकि I've been to see Sir Radzik. So how did he take the news? Well, he wasn't exactly happy about it. I can well imagine. I wouldn't want the Zulus plundering my estates either. He wants us to carry on patrolling the area. There's nothing else for it. That makes sense. I don't think he'll come to us. So we'll just have to hope we run into him. I'd like to check out the big forest to the north, and then carry on via Ujits. Mount up now. Let's go. अभी का प्ले थ्रू में सब साइड क्वेस्ट वगैरह करूंगा. आधा गेम ये डीएलसी साइड क्वेस्ट में ही है. पता नहीं था. नहीं डीएलसी वगैरह इतनी बड़ी नहीं है इनकी. आई थिंक वो क्वेस्ट गिवर और वो एक्टिविटीज है ज़्यादा टाइम लेने वाली. हंटिंग और वो क्वेस्ट गिवर वाले में. बट हाँ ये भी अच्छा टाइम देंगे इन्हें करोगे तो. मनी भी है टाइम भी है दोनों. मैं तो भाई अब सिर्फ डीएलसीज ही कर रहा हूँ. डीएलसी जब मेरी सारी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद मैं फिर मेन स्टोरी कंटिन्यू कर लूँगा. और फिर भाई मेन स्टोरी में भगाऊँगा अब क्योंकि मेरा सब कुछ हो चुका है. और मेन स्टोरी में जो साइड क्वेस्ट आते हैं ना इंटरकनेक्टेड वाले वो सब तो मैं करता ही हूँ. मैं स्किप नहीं करता क्योंकि वो अच्छे हैं. मैंने गेम को पूरा अच्छे से निचोड़ के खेला भाई. मुझे अच्छा लगा. कट सीन भाई ये कट सीन कितने अच्छे लगते हैं. Please, can you stop for a bit? My arse is aching, and I've such a thirst I could drink a moat dry. Same here. What do you say, Chief? Not to worry. We choose it soon. Spend the night there. I hear you got a peculiar priest. You see, he thinks like the devil himself. It's nothing strange. The other man on the cloth is a swill pot, or a ledger, or both. भाई ये these are the memorable moments.
Sir Radzi. The manner of speaking. What's the matter? These brigands came. The menfolk fled and left us there. They started pillaging the place, drinking whatever they could find and smashing things. I ran off, but the other girls... I've got to save them. Please, I beg you. Drinking, you say? Aye, sir. They rolled the casks into the courtyard and started swilling like pigs from the trough. As our old cook used to say, if you want to make a proper goulash, you should soak the meat in ale for a while. Soften it first. Let them get well soaked, and then go and chop them up. Good thinking, Chief. What about the girls? Those men, they were... I'm sure your friends won't be getting nothing they ain't had before. Unless they're nuns. The girl's right. If we delay, her friends will pay the price for it. I appreciate your advice, Henry. But it's caution that will keep you alive, not chivalrous deeds. You promised Sir Radzik you protect his fiefdom, and that means his subjects too. Come on, it's not like that, lies. Hargan's men just want a bit of fun. A bit of fun? Are you fucking serious? You know very well, Kuno, how innocent girls can end up after a bit of fun with animals like that. Well, I, for one, am not going to sit back and let it happen, even if I have to creep in there myself and try to rescue them. It's not the smartest thing to do. But let's go and tackle those fuckers if that's how you want it. Good. Thanks. Right. We better try and save them. Mother! Who wants their back covered? It's a sign from God. A foretaste of what we'll do with the liquid loot we take from the foe. Shit. I wanted to charge you. वो गे बंदा चला गया। हाँ, आ गया भाई, लेकिन फिर आ जाएगा मुझे लग रहा। वो रोज आता है भाई मजे मारने। He's पूरा पागल। अरे ये क्यों उठाओ, ये उठाओ ना। Good work, lads. Where's those dead? They saw the bit of you.
say I blame you. Hey! You want to have a scrap with me? Scrap? That's putting it in vulgar terms. I want to challenge you to an honourable bout of combat. हाँ भाई संभाल के ही रहूँगा उससे. We've nothing better to do right now anyway. Nah, let's forget it. That I still like you. Save. भाई डीएलसी अच्छी है भाई. ऐसे ऐसे मिशन खेलने में मजा आता है. लड़ो लड़ो लगातार धड़ 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 धड़. बस एक ही रेग्रेट है, उनको नहीं मार पाया मैं. वो डेवेंडिट्स को मेरे को लगा 10-15 नहीं ओपन 10-15 नहीं कम ही थे, बट फिर भी मार एफर्ट नहीं डाला मैंने. Scrap with me? Scrap? That's putting it in vulgar terms. I want to challenge you to an honourable bout of combat. We've nothing better to do right now anyway. Alright. A little practice always helps. My very words. Come on then. Got weak in the knees, have you? You'll get what for.
fucker! Lad. So you'll have some tales to run to Ransing with. There used to be this charlatan in college who lived in a house. सुनसान है आज. Damn good booze, eh? As my old man used to say, the fire of battle must be quenched. Of course, the only battle he was ever in was with Martin. But still, it fits. Anyway, I hope you'll drink with us. We shouldn't be doing that. Doing what? This. Drinking and eating. This stuff belongs to the people from the mill. Do you see any people from the mill? They're all shitting themselves with beer somewhere in the woods. Leave off the preaching. Grab a tankard and booze like a normal bastard. Or I'll send you back to Ransing in disgrace. Suppose I invite you to the tavern. There we'd even have service. No offence, Henry, but I doubt you can afford it. Every one of us can drink like 10 men. No, I mean it. I'll give you the coin for it. Are you serious? You pay for us, just so we don't finish off the few scraps that are left to those people. Exactly. Fuck me. Quite the good Samaritan, aren't you? I thought you were having me on. All right then. You're good. उनको मार दिया. हाँ, एनिमीज को मार दिया मैंने. We agreed. It's not enough. Very magnanimous. All right. We'll go then. Thanks. You're welcome. It's a pity there aren't more good Samaritans around. अरे मैं चोरी चोरी बहुत करता हूँ. मसल जला के किधर गए? मसल जला के किधर गए? लॉल मशाल. अच्छा, मशाल जला के किधर गए? कैंप में जाने की बारी आ गई.
भाई बैंड ऑफ बास्टर्ड्स है तगड़ा DLC। रुका भाई, फास्ट ट्रैवल मार के जाता हूँ अच्छे से। उनको छोड़ के, अरे वो लोग खुद ही पहुंच जाएंगे कैंप, वो साथ में नहीं जाना है। वो टास्क है कि कैंप वापस जाना है, वो अपने अपने रास्ते से जाके हो जाएगा। बीच रास्ते में मुश्किल हुआ तो क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अब पहुंचता कैंप। अरे यार फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, शिट। चार्ज कर लेता। 70 आ गई थी भाई, लिटरली मैं क्या बताऊँ भाई। 70-72 भी बहुत कम लगता है। रात में फिर करूँगा क्या भाई बैठ के। क्या फ़ोन है? रेडमी 70 हो गई थी भाई बैटरी। ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, सुपर चैट बोला, चैट्स पढ़ने के लिए। Tell me something about yourself. What do you want to know? Your brother was saying you rode before with some Kalini fellow. He did he? Did he tell you why we finished with him? Yeah, he said you missed Bohemia. Miss Bohemia, that's good. But
far from the truth. You haven't missed any place where he wouldn't have a band of furious Italians looking to skin him alive. Ah. He did something to anger them. Oh, aye. While Collini was away, he broke into the trunk where the coin was kept. Took it all and wagering it with a fella who claimed his bear knew how to dance. Lost it all. What? The bear really did dance? Aye. The costiest charters we ever watched. We had to get the fuck out of there before Collini came back and had the two of us dancing on the end of the road. What is it, Jakey? The stone wants to talk with you, if you can call it that. Probably about that ring. What ring? Ah, no one told you about it. The fellas call it the Ring of Buckles. It's a kind of game we play. Kuno gave us this ring. It's just a worthless bauble. But when we're at the tavern, Kuno pays everything for the man who has the ring. So we steal the ring from each other and try to trick each other. Well, actually, just the others. They won't let me play. Kuno's too young to get boozed up. That sounds like a lot of fun. But I don't have the ring, so why does the stone want to see me? It probably wants you to steal it from someone. Since you're new, the fellows will talk to you, and it won't be suspicious. All right, I'll have a word with him. Hey, Jakey, can you tell me something about yourself? Want to get matey, eh? Sure, Henry. What do you want to know? How did you end up in Kuno? I used to be a baker's man in Prague. But all the other fellas were always on my back, always swearing at me. Sometimes they even beat me. Took everything I had. To make a bit of it, I started going to a tavern across the road, entertaining the rich gents with jokes and playing the fool. Sometimes someone was throwing a sack off. One time, Kuno turned up, and I got to talking. When I told him all the shit I was getting at the bakery, he offered to take me with him. Are you glad to get out of there? Yeah, though it's not like they give me much peace here either. It's all, Jakey, come here. Jakey, go there. Jakey, get that. Surely you can't be any worse off here than in the bakery. no. Only at the bakery, the worst I ever got was a beating. It's not like my life was in danger. Here, when those Beerman brothers are drunk, I will keep well out of sight. How can they bully you in the bakery? It's usually the shy ones bullies me, it's not exactly you. Not now, mate. I learned a thing or two since then. Oh, come on, you, shy? You just said you were playing the fool and telling jokes in the tavern. All right, I'll tell you the truth. They picked on me because I'm an orphan. The parish priest of St. Apollinaire in Prague found me as a baby in the church in the winter's morning. I spent half of my childhood in parish houses and half on the street. I see. That must have been tough. It still is tough, I can tell you that. Jakey sent me to you. Something about a ring? I suppose you want me to get it from someone? Who has it? I didn't quite... Is it Fletcher? Does Dangler have it? Alright. How should I get it? So what do you think about recruiting someone? Hey, I want the ring of Bacchus. I heard you have it. So you come and ask me for it. That's a novel approach.
You don't just have to steal it from each other. Why not play for it? I don't play dice, but we can duel for it. Right? Why not? I'll wager the ring, and you put up some caution, right? Sure. I'll wager that. That'll do it. Now it's something worth fighting for. You better watch out. बेटा बेस्ट स्वॉर्ड ले ली मैंने अपनी. I'll chop you to pieces, you rats! God! Give it up already. प्रैक्टिस मैच. हाँ एक हम लोग एक रिंग के लिए कर रहे हैं कि अगर मैंने उसको डोल में हरा दिया तो मुझे एक रिंग मिलेगी. Just watch out it doesn't get pinched. I'll do that. Thanks. I got the ring from Dangler. Yeah. I suppose there's not much more either of us can say about it. Yeah, thanks to you too. मुझे एक बुक मिली है. अबे तू खुद काला है भाई. We set out. Sure. We'll head towards Sassau tonight. Jakey heard at the tavern at the Dutch going that someone there saw some unfamiliar horseman. You think they could be Hargreaves? Maybe, maybe not. It's enough that they're not local. Could be the escort of some merchant caravan.
Jakey, go and scout ahead. Doors running into any surprises. See if there's a good spot for us to camp. Right, Chief. What's the matter with Jakey? Don't back talk. I gave him a swig of snaps and suck. Perhaps he made a man. Well, that porpoise of yours took away his will to live. वाओ मैन, क्या सिनेमैटिक्स है। फक Henry? I'm coming, brother! Catch my horse! On the riverbank! Let's get back to the bank! Quick! Before they cut us off! हेलो लियोन, वैसे जब भी बॉनी, माइक, आर वो सब ने धोखा दिया तब क्या रिएक्शन था? हाँ यार, वो सपने वाला पार्ट अच्छा था। अटैक करना। सपने वाला पार्ट मास्टरपीस, लिटरली क्या ट्रांजिशन था, एकदम मस्त जगह प्लेस किया। वही अभी देखते जाओ भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे। सीजन 3 स्टार्ट कर दो। सेव, अरे नहीं, कॉम्बैट में
तुमने क्या चॉइसेस लिया था सीजन 2 के एंड में? वेलिंगटन, ये याद नहीं आ रहा है मैंने को एकदम लास्ट में। तो मैंने बता दी कि मैंने शूट कैनी किया था। वो कैनी कहता है कि मैंने सही किया उसको मार के, कि वो खुद ही एडमिट करता है कि मैं पागल हो गया था। और वो जेन को फिर मैंने क्या किया कि जेन बताती है कि वो बेबी जिंदा जिंदा है, मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि कैनी पगला गया है। फिर मैंने जेन को अकेले छोड़ दिया, उसको माफ़ नहीं किया। उसके साथ उससे फिर मैं उसको छोड़ के अकेले भाग भाग गया। What now? I don't know. They could be lying in wait for us anywhere. Someone must have snitched on us. We should split up and get the fuck out of here. So every man for himself? Just so. But you think it was one of the band who tracked us? Look around for yourself. Who's missing? Jake. That's who. I sent him on ahead, and he knows which way we're going. Let's all fucking choose. When I get my hands on him, he'll rue the day he was born. I'll try and track him down. He can't be too far away. No, it's too risky. He could have Harkins people all around us. All we need to do is get out of here in one piece. ओ अच्छा, स्ट्रीम पे देखता हूँ। हाँ मैंने स्ट्रीम करा हुआ है, उस पे देख लेना। सेव। स्ट्रीमिंग का भी सही है भाई, मेमोरीज बनी रहती है, सब पता है कब कहाँ क्या करा है। ली जितना अच्छा कैरेक्टर कोई नहीं बन पाया सीजन 2 में भाई। ली तो बेस्ट था भाई, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक ही सीजन में था लेकिन उसका वो पूरी स्टोरी में बढ़िया इम्पैक्ट था। ऐसे लिखते हैं भाई कैरेक्टर। अरे तेज चला ले यार, काहे बात का स्लो हो गया।
मुझे वो 400 डेज डीएलसी खेल के लगा ये कैरेक्टर्स, ये अच्छे कैरेक्टर्स है बोनी सब, लेकिन बोनी धोखा दी तो समझा ये लोग गलत जगह फंस गए। हाँ भाई, बेसिकली उन लोगों ने दो पर्सपेक्टिव दिखाया है। मतलब हम लोग एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से खेल ही रहे हैं, कुछ देख क्लेमेंटाइन के पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादातर स्टोरी खेल ही रहे हैं, वहाँ पर्सपेक्टिव चेंज हुए। डीएलसी मिसलीडिंग था, अगर डीएलसी नहीं खेलता तो मैं शक ही करता उस पर। हाँ डीएलसी खेल के फील आई होगी कि ये लोग भी स्ट्रगल ही कर रहे, सर्वाइवर्स कर तो रहे थे वो भी स्ट्रगल अपना, लेकिन उनका अलग है। डीएलसी के कैरेक्टर्स में बॉनी को छोड़ के ज़्यादातर किसी को तगड़ी स्टोरी थी भी नहीं। मैं टॉयलेट करके आया। आ गया। मिस्ट्री अच्छा बनाते हैं, ट्विस्ट सब थोड़ा रेपिटेटिव रखते हैं, इंटरेक्शन कोई बंदा आता ना सामान मांगने और दया करके देते, फिर बाद में धोखा देता बंदा दे के लेके आते। अरे यार मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस चूतिए पे, मैंने उसको भाई उसका चोरी वोरी कुछ नहीं किया, फिर भी मैं हम पे चोरी करने आ गया और भाई ज़बरदस्ती का अटैक करवा दिया। बहुत गुस्सा आया था।
आरओ है ना, फिर इंसानियत दिखाया, बाद में क्लेमेंटाइन को ही गोली मार दिया। कैनी ने तो उसको मार दिया होगा सीधा। यार वो तो भाग गए ना वो लोग, दिक्कत यही है, साला अनआंसर्ड रह गया वो। भाई कैनी एकदम, कैनी का गुस्सा ना आरओ पे तो जस्टिफाइड था, ये मैं आराम से बता सकता हूँ। देखने के बाद ये रियलाइज हो गया। बैन को भी सबसे बेकार कैरेक्टर था, कुछ नहीं करता लिटरली। मुझे लगा कुछ तो रिडीम या सैक्रिफाइस देंगे, कुछ नहीं किया। भाव बच्चा ही था यार वो, उससे उसके बस की कुछ नहीं। एक चीज नोटिस करना, जवान लड़कों को पे कैनी बहुत भड़कता था, जैसे बेन आरओ लूक से ही चिढ़ता। हाँ, बच्चों पे तो गरिया देता था भाई। What's it about, Stefan? Ah, Henry. The very man I wanted to see. I heard you got the ring from Danton and gave it to the store. Maybe. Let's not get around the bush. I could use your help too. I think the stone is at the ring long enough, if you get what I'm saying. I don't want to go rummaging in anyone's belongings. Not this dangerous lots, anyway. Ah, don't worry. I'll take care of that part. I need you to do something else. I want to steal the ring from the store while he's asleep. That fella sleeps with one eye open. He needs a little help sleeping soundly. And I've got a feeling you're the kind of man who knows how to arrange that kind of thing. Sure. I'll bring you some sleeping pills. Great. I knew I could count on you. And if you happen to come across that ring, all the better. लुल्लाबी पोशन। यही मिलता है। बेस्ट डीएलसी टीटीएस हाय सेड हाय हेलो। ये जियो वाला लियोन है क्या? यस यस वही है वही है। शुभ भाई हेलो। केसीडी खत्म हुई आपकी? नहीं, उनकी चल रही है अभी। लुल्लाबी पोशन यस भाई, डीएलसी है तो भाई मानना पड़ेगा। बैंड ऑफ बास्टर्ड्स। लियोन गेम्स नहीं खेल रहा। हाँ अभी शुभ भाई का गेमिंग वाला आर्क नहीं चल रहा है। अच्छा लियोन आर प्लेइंग टेलटेल वॉकिंग डेड। यस ही इज प्लेइंग। वो डिस्पैच का पापा है बाप गेम। यस यस
लुल्ला भी पोषण कहाँ है चाचा? अच्छा रेसिपी भी देता है। अरे यहाँ में बनाना नहीं। लुल्ला भी 2 ले लेता हूँ, अगर मान लो एक और जरूरत पड़ गई तो। Can we do something about the price? Well, we can try. Satisfied? It'll take more than that to persuade me. Aye, that would do it. यस वॉकिंग डेड सीजन 2 कंप्लीट होगा, सीजन 3 चालू होगा। झाटू डिस्पैच साला हो। तो देखो बेटा, अरे कैंप मारकर क्यों गायब कर दिए लोग? अच्छा तो लग रहा था। सबू और मैं साइड क्वेस्ट भी किए, साइड के अंदर भी जो साइड क्वेस्ट है वो भी किया, पूरा सर कटवा लिया भाई बहुत। मेन क्वेस्ट के अंदर भी जो साइड क्वेस्ट है वो भी किए। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि कुछ मिस ना हो हमसे। मैंने बस वो ट्रेजर हंटिंग में मुझे नहीं मज़ा आ रहा तो वो नहीं कर रहा मैं। मुझे मतलब वो ट्रेजर ढूंढने में उतना फन नहीं फील हुआ उस, और उससे ज़्यादा मज़ा तो मुझे मतलब वो रहता है चोरी वोरी करके बेच दो सामान। अभी तो खैर जो मैंने आइटम्स चोरी किए हैं ना वो उनमें वो मार्क लगा हुआ है, और पेशक को बेचने का तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा था मेरे को। मैं थोड़ा फिर रिसर्च की कैसे होता, तो उसमें लिखा कि इन गेम डेज थोड़ा वेट करो, मार्कर हट जाता है फिर बेचना। साला सुपर नहीं रहा होगा ना, बवाल हो गया सब। थम जाओ, कितना सुपर हो? 4K रेजोल्यूशन पे खेल रहा हूँ? नहीं, मेरा 1080p है। अभी मेरे पास है 36K और कट गया भाई पैसा। वो इन लोगों को मैंने बोला कि चलो मेरी तरफ से पार्टी ले लो, इन लोगों का तावन वाली पार्टी मेरी तरफ से ले लो। ज़्यादा मैंने अमीरी दिखा दी। DLSS ऑन करो, गेम में घुस जाओगे एकदम। भाई हेनरी ऑफ स्केलेट्स चाहिए भाई, हिजड़ा नहीं चाहिए। Potion for you. A few drops in the stone's drink and you'll sleep like a baby. I hope not. Babies have a tendency to shut themselves and wake up screaming. थैंक यू भाई 100 ग्रॉशन। भाई ये रिंग वाला गेम भी अलग चीज है। द रिंग इज अ सोडा। यह क्वेस्ट रिपीटेबल लग रही है, ऐसा लग रहा। मतलब ये लोग बस रिंग चोरी करने का गेम खेल रहे हैं बस एक दूसरे से, यही चल रहा है। See everyone made it back in one piece. Thank Christ. Someone up there must like us. Somehow we always manage to get out of this sticky situation. Someone up there. कौन पादा? पादा कोई नहीं, मेरे मुंह से हंसी निकल गई। Well, the main thing is we made it. So we'll go patrolling again. We will, not you. What? Why not? I found out where Jakey is. I want you to grab him, beat everything he knows about Harlan out. एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग रिक्स। मुझे सुनाई दिया आई विल स्लीप विथ योर बेबी, फिर रिवाइंड किया, सही सुनाई दिया। मुझे लगा गेम साउंड थी। शुभ भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Well, that sounds like a good plan. But why me? For one thing, you're reliable. For another, you're not likely to wring his neck on sight. Which wouldn't set the rest of us.
What are you going to be doing in the meanwhile? We'll go on patrol as normal. It could be a trick, you see, to lure us into a trap. But what if they're waiting to spring a trap on me? It could well be, anyway, so you should be very careful. But one thing's for sure, Jakey won't be there forever. Someone's got to go and check it out. Where is he hiding? He isn't. Shit. He's drinking away his dirty pieces of silver in some alehouse, bold as brass. The inn on the meadow, something like that. The inn in the glade? अरे वहाँ तो मैं गया हूँ, वो एंड्रू की जगह। I'll get going now. Go. And when you find him, deal with him however you see fit. Just make sure you find out what he knows first. Right, Chief. थर्टी पीसेस। इंस्टा फीड तो मेरी ख़त्म है, ट्रॉमेटाइजिंग रील्स के साथ कुछ नहीं आता भाई। मेरा भी वही हाल था भाई, जब देखो भाई साहब वो रिलीजियस रील ही आ रही है, गाली वाली दे रहे गुस्से, वो सब देख के मूड ख़राब हो जाता था, छोड़ दिया। गेम ख़त्म होते होते तुम भी रियल लाइफ में जीसस क्राइस्ट भी प्रेज और हैंड साइन करने लगोगे भाई। मेरे तो दिमाग में बैठ गया है वो सब। अबाउट राटे, व्हाट काइंड ऑफ लॉर्ड इज सर हानुश? डू यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन स्केलेट्स? ऐसे ही थोड़ी स्पीच लेवल बढ़ाया है। God be with you. Hey lad, don't you wanna put wager on a rat attorney? पूरा पागल करके रख दिया है। 30 पीसेस यहाँ है ना। My lord, मैं लॉर्ड और योर ग्रेस वाली लाइनें नहीं है वो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे। इसमें भाई बार बार जीसस क्राइस्ट बी प्रेज्ड, गॉड बी विथ यू। ये वाईटी क्या क्या सीन है, एक वीडियो पर 87 व्यूज हैं और अब 29 लाइक्स, 29 दिखा रहा। अरे होता है भाई, होता है, मेरे साथ हुआ था। मैंने एक वीडियो एक बार डाली थी 2023 अप्रैल में, GTA 5 की एक वीडियो थी, तुम अभी देखोगे मिल जाएगी। मेरे जब वो वीडियो अपलोड की उस पर 200 व्यूज़ आ गए, और अगले दिन मैं जब सो के उठा तब देखा व्यूज़ 200 से 150 कुछ चले गए। मेरे दोस्त ने भी मुझे बोला कि भाई उसको वहम हुआ कि मेरी वीडियो पे 200 व्यूज़ थे। मेरे मामा ने भी मुझसे बोला कि तुम्हारी वीडियो मेरे को दिखी, उस पर भी 200 व्यूज़ थे। मैंने कहा नहीं, आप लोगों को वहम नहीं हुआ, वो एक्चुअली में 200 ही थे। May the God be with you. September 30th, 1998, the day I will never forget. Cop inside me died that day. Yes. भाई वो वाली लाइन ना मेरे को RE9 खेलते वक्त दिमाग में आ गई थी, जब वो एंटर करता है रैकून सिटी में, वो खास के पुलिस स्टेशन में। मेरे को जानता है ना तू। थैंक यू एंड्रू। Well, I was going to throw him out on his ear at first. Ordering people around. He's nothing but a snot-nosed brat. But then, he showed me the way of his person. Business is business. He stayed here a couple of days. Yesterday evening, he was bruising you. And then went off to the woods with some wench. To the woods? It's a very broad term in these parts. Someone said they saw them heading south yesterday. There's pine woods there, ain't cliffs? And that's where they went. The girl's father was here. Weren't you? As soon as he noticed she was gone, he went off to look for her. You might meet him. All right. Thanks. PBS नासा स्ट्रीम पे लाइव रिएक्शन दे रहा है। हैं? सही में? था September 30th, 2025, the day I
I will not forget the CM inside him. The come inside him evolved after that day. 13th September 2025. The day I fucked Rick. And on that day he became pregnant man for the first time. क्यों रे वीटो स्पार्टा 4 और जॉनी केक्स के छक्के भाई वही वाली हरकतें करता है एक दो भाई। उन दोनों की तरह लड़ेगा, ऐसे ऐसी चैटें लिखेगा खतरनाक वाली और फिर पप्पी भी लेगा। खतरनाक आदमी है ये भी। चुसा हुआ आम भाई। फिल लियोटार्डो ना कभी कभी उसके लिए इज्जत रहती है इस मामले में। फिल लियोटार्डो ने भाई जो करा था ना, मतलब उसके साथ जिसको पेला ना धड़ाधड़। अरे तू छक्का होके तू मेरी कज़न से शादी करेगा और तू छक्का है, ऐसी की तैसी। मज़ा आ गया था भाई। सारे सोशियोपाथी तो थे वहाँ। कहाँ मिलेगा इसकी चाकी मुंह। अरे अटक गया मेरा घोड़ा। अब भाई मैंने वो लाइन बोली ना, वेरी किसका भी डबल मीनिंग निकालेगा। वो सीन तो पीक था, मानना पड़ेगा। अरे भाई वो अलमारी से बाहर आ गया भाई लिटरली। फिल लियोटार्डो अलमारी से बाहर आया लिटरली। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई सोप्रानोस की, सोशियोपैथ्स को जिस तरह इन लोगों ने दिखाया ना, मतलब सारे कैरेक्टर सोशियोपैथ थे। टोनी, क्रिस्टोफर, पॉली, सिल्वियो, हर कोई जितने कैरेक्टर थे भाई उस फैमिली का पार्ट, सारे सोशियोपैथ थे। एक भी कैरेक्टर वैसा नहीं था कि मोरली अच्छा हो या ये वो। टोनी सोप्रानो इज द ग्रोटियस इज यार। एंडिंग लेकिन कुछ ज़्यादा ही वो अजीब लगी मुझे फिर भी, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। वो एंडिंग यार मतलब एकदम बहुत ही वो वैसा लगा ना कि कुछ ज़्यादा ही अजीब तरह का फिनाले था। मैंने कल उसका देखा एक वो बॉबी बकाला के एक्टर का पॉडकास्ट देख रहा था, तो उस पर वो बताता है कि उसको खुद नहीं पता था एंडिंग में क्या है, क्या हुआ। कुछ लोगों को लगा एंडिंग में ये हुआ, कुछ को लगा ये हुआ, और डेविड चेज ने आके कंफर्म किया एंडिंग क्या होता है। वो एंडिंग थोड़ी मतलब अजीब सी लगी यार। एंडिंग तो वियर्ड था काफ़ी, रश एंड करा उन लोगों ने इसमें। यार रश तो नहीं कहूँगा मैं, स्टोरी जो चल रही थी देखो, फिल का खेल हो गया था और क्या ही करते। सोप्रानो उसका मेन पॉइंट ही है था ना, वो ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रख रहा था। वो वैसा शो था ही नहीं कि सेटिस्फाई करे तुमको हर एंगल पे। चाहे वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला एपिसोड हो जिसमें लाइक एज अ व्यूअर ना हर कोई चाहता था कि भाई टोनी को उस बारे में पता चल जाए, उस ग्रेपिस्ट के बारे में, और टोनी हो सकता है खुद ही वो काम कर दे उसको मारने का, क्योंकि लॉ वाले कर नहीं पाए, पुलिस वाले कर नहीं पाए उसको पकड़ने वाला। वो लोग उसको छोड़ दिए बिना एविडेंस के, क्योंकि एविडेंस नहीं था कुछ। एज अ ऑडियंस यू वांटेड कि तो वो हो, लेकिन नहीं हुआ। वो शो ने करप्शन भी काफ़ी अच्छा दिखाया। इट वॉज नॉट गोइंग टू द एंड बाय द वे दैट वे, कुछ और भी प्लान था। वियर्ड एंडिंग थी भाई, मतलब ना ही बहुत मतलब वो थी कि मतलब ऐसा नहीं था कि बुरी एंडिंग थी, बुरी फार फ्रॉम बैड, बट इट वॉज लाइक फार फ्रॉम बीइंग ग्रेट एंडिंग एज वेल। इट वॉज लाइक अ एवरेज और अबव एवरेज एंडिंग। RE5 खेलने जाता है जियो के साथ, अगर फ्री हुआ तो आ जाना। हाँ बिल्कुल। लाइव कर रहा है क्या जियो भी? It's me! Glad you're here, Henry. I thought I'd be stuck here till Judgment Day. What the fuck are you doing here? I picked up this wench at the inn, see? And we wanted to go somewhere quiet. Only bitch whacked me on the head with a rock. Fucked up with all my coin. Did she now? Which way did she go? I haven't a clue. But I reckon as far away from my father as she could get. She won't be going back in that way. But I've met some mad wenches in my time. That piece of work. She could have just asked me for coin.
could have tried to smash my skull right away. And then to leave me like this. बैड नहीं, डिसेंट एंडिंग। वही मैं बैड तो मैंने कहा कि बैड नहीं थी, बैड एंडिंग नहीं थी वो, इट वॉज अ डिसेंट एंडिंग। मतलब लेकिन थोड़ी अजीब लगी। जो मतलब वो ब्लू कॉमेट में बिल्टअप किया था ना, उसको देख के मेरे को लगा थोड़ा शायद सिनेमैटिक जाएगा। स्ट्रीम पे आ जाना अगर फ्री हुए तो। हाँ I'll say that's the popcorn and the kettle black. Listen, Henry, that thing with Hagen, I didn't want to, really. But they kept threatening me. And then they offered me coin. Jesus, Henry, I've never seen a pile of them like that in my life. Kudo wouldn't give me as much as half a groschen for a cheap wench. Yeah, my heart bleeds. Enough. Tell me where I can find Hagen. Hagen? Lord Zoom? Yeah, I'll tell you, Henry. We're still mates, right? Don't know if I'd go as far as mates. But let's just say I understand. I knew you and me would understand each other. So you'll let me go if I tell you. Let you go? That rock must have really scrambled your brains. Henry, I'm really sorry. I swear. Those fellas scared the wits out of me. I can believe you. But why didn't you tell us about it? You didn't have to betray us. I don't know. I was confused. Please, let me go. First, tell me where Hagen is. Then we'll see. I won't say anything as long as I'm tied up. I know how that goes. I'll be left-handed. एक सेकेंड, फ्री कैसे होगा? होने दूंगा तभी तो। यार देखो, Why did you have to betray Kuno? You could have just taken the money and done nothing. Yeah, just like Kuno would do. You've only been with us a while. If you'd been riding with him as long as I have, you'd see through it. He passes himself off as an angel of mercy, but he's as much of a swine as any common footman. You're an ungrateful brat, Jake. There's lads of your age working the field and sweating in forges, and no one pampers them. You get a chance others can only dream of, and what have you done with it? But they don't risk ending up gunning up in some ditch day in, day out. Funny you should say that, since you just came pretty close to it. For what? You go boozing for a few days, and then you get duped by the first wench you run into. You don't want to talk? All right. But I can leave you to rot here if I want. Well then, you going to talk? Like I said, untie me, and I'll tell you everything. All right, I'll untie you. Thanks, Henry. I knew you wouldn't leave me here. It's out. Quick. Sure. Hagen's planning to leave a raid on Summerfield himself. He wants to torch the whole village soon. Jesus Christ. Yeah, it's awful. I'd like to stay here and talk about it, but if that's everything, I'd rather be on my way. You can go, Will. You can go with me to the Ratai jailhouse. Wait! We had an agreement. You promised you'd let me go. I promised to untie you. I didn't say a word about what would happen after. You fucker! चल बाबू जेल चल। Damn, man, that hurt. You'll die for that.
भाई अगर इसने सिर्फ चोरी की होती ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इसने लिटरली हम लोग की जान जान दाव पे लगा दी। जेल जाना तो डिजर्व करता ही है। जेल चुपचाप चला जाता मेरे साथ। स्निच कर दिया लिटरली भाई। भाई मानना पड़ेगा यार, गेम बहुत बढ़िया है। I found Jake, and I know what Hardy is planning. Spit it out, then. Zul plans to raid Sam Pesha. He wants to lead the attack himself. Let's see. And what about that treacherous little bastard? He's dead. Oh, well. I always thought that news would come as a relief. To be honest, I suppose I have a soft spot. Well, what's to be done? It was his own stupidity that killed him. Saddle up now. We'll ride to Samopash right away. All right. Let's go. Zul's colours. It seems they want to parlay, so... Parlay? Right then. Let's parlay.
God be with you, Sakuno. My respects, Sahag. I don't believe I've had the pleasure since the siege of Lansingback, wasn't it? An age ago, that was. In those days, we fought the same banner. We did. And even today, we may yet part friends. After all, my quarrel is not with you, but with Coppola. The thing is, your quarrel with Lord Coppola is my affair, since he tasked me with keeping order in his lands. You, arguably, were disturbing me. No offence, sir, but you are just a mercenary whose main concern is keeping order in his purse. My dispute with Radzig Coppola concerns a higher ideal. Coppola shamed my family, trifling to me. He hanged my father, raised our castle to the ground, gave our property away to his family and cronies. And for that, I demand just retribution. But you don't have to stand in my way, Coppola. I'm well aware why you saw Radzig. You are in favour. And from what I've heard, it's not the first time you've had to pay him back. It won't be the last either. The fact of the matter is, you fight Coppola's battles for him. Little or nothing to show for it. If you accept my offer, on the other hand, you can ride away from here a rich man. What do you say, sir? You're making a common mistake, Henry. There's a difference between what a man can't do and what he ought not to do. In this case, the difference is the size of Hagen's offer. Have you no honour at all? To sell yourself to the highest bidder? Radzig never offered me a grosh. Because you owe him a favour. And this is the third time I've had to pay him back. My conscience is clean. Tell me, Henry, what do you think makes a good mercenary? If I knew that, I'd have a marble palace in Florence. I'd sit all day on a golden throne, drinking wine. But I suppose for a start, I should be skilled in warfare. Well, that's how you see it. But what about those who enlist your service? What they value is loyalty and fulfilling your duty. A mercenary who turns after coin like a vane after the wind isn't worth his salt. An eloquent speech, but like I said, I've paid Radzig back quite enough. So if you don't mind, I'll take that pot of coin and fuck off. And then what? Do you think anyone will ever hire you again after they hear of this? With that much money, I won't have to worry about that for a while. Anyway, everyone will understand how things really spend. Do you really think Sir Radzig and others like him will share your interpretation of mercenary's honour? Not a chance. Everyone will see you for the swindler and turncoat you are, and Sir Radzig and I will make damn sure you won't come out of this smelling of roses. Are you threatening me? Call it what you like. Fine. It seems you have learned something after all. You'll stay then. Obviously. Didn't seem so obvious to me. Come on now, Harry. Don't take offence. Let's go and deal with Harley. It's true, Saga. This is not the first time I've paid Radzig back. Nor will it be the last. But then, he did save my neck from the noose. So I'll be long beholden to him. I'll make no bargain with you. But I won't take yourself. You will fight me. You're a damn fool. I've no wish to fight, but neither do you. Otherwise you wouldn't have tried to buy me off. So it seems that we're evenly matched.
Let's see who fortune favors. Yeah, bitch! So be it. I'll ring your neck. Kuno is dead. ले PIR हो गया. कूनो तो डेड भाई, कूनो डाइड, बट भाई एटलीस्ट ही वाज ऑनरेबल. लिव्ड बाय द स्वॉर्ड, डाइड बाय द स्वॉर्ड. रिस्पेक्ट. बेटर देन दैट जेकी गाय. आई थिंक यहाँ से मेरा बैंड ऑफ बास्टर्ड्स भी एंड हो जाएगा.
अच्छा डीएलसी था भाई, एक वॉर वाली फीलिंग दी हल्की हल्की, मतलब क्या कैसे सब कैंप में रह रहे। इट वाज अ गुड डीएलसी। Lived by the sword, died by the sword. बहुत प्यारी डीएलसी रही भाई, मज़ा आया खेल के। नेक्स्ट करूँगा सर हैंड्स के पॉन की एडवेंचर वाली डीएलसी। And best RPG game for a reason, man. Sir. The Lord be praised. What brings you to me? Sir, we got rid of some. Finally, some good news. Tell me all about it. We caught up with Hagen in the fields near Merhoyt. There was a skirmish. It was a tough fight, but in the end, we were victorious. Hagen fell. Good. That's good news, Henry. Any losses on our side? Kuno's men? How did they fare? Some of Kuno's men fell, unfortunately. Sorry to hear that. Such is a mercenary's life. May they rest in peace. Anyway, you deserve a reward for your efforts. And thank you, Henry. Once again, I'm beholden to you. I don't know what I'd do without you. Thank you, sir. But I'm sure you'd have managed without me. Don't be so modest, lad. Since that catastrophe at Skalitz, I don't have many people left that I can rely on. Best go and rest now. Thank you, sir. बैंड ऑफ बास्टर्ड्स खत्म भाई, मास्टरपीस था भाई, मास्टरपीस, नथिंग लेस देन अ मास्टरपीस। इतना बढ़िया डीएलसी था भाई, आई लाइक्ड इट, आई वाज गुड एट इट एंड आई वाज लाइव। ऐसे होता है डीएलसी भाई, ऐसे बनाते हैं डीएलसी। बैंड ऑफ बास्टर्ड्स। Next is Sir Hans Capon. हाँ, हट गया हट गया हट गया। What else? I'd like to discuss the price. All right, Phil.
What do you say to this? That's still too much. All right, so. Let's talk about the price. All right, so. I'd like to discuss the price. All right, so. भाई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, चोरी ही चोरी करेंगे लगातार।
टाइम निकलने दो बेशक जागेगा। Good health, Neil. Can you tell me something about the other fellows? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wood-thinking Kohelnitz and Simon Assassin. What about this Simon assassin? An odd one he is, a loner who don't tell much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Let's talk about the price. All right, son. ये गरीब इसकी माँ की चू। वो राटे में है ना, उनको बेच देता। वो पेशक के पैसे मैंने उठा लिए थे ना, उसके ऊपर 0 है। फ्री का थोड़ी दूंगा इसको माल में अपना।
I'll be with you. I'd like to discuss the price. All right, so. Let's talk about the price. Well, try it. I knew we'd come to an arrangement. भाई अभी मैं थोड़ा देर ऐसे ही यही करूँगा, इधर उधर करके बस पैसा चोरी करता रहूँगा। मैं थोड़ा पैसे ही बढ़ाने हैं ना वो DLC के लिए। 40K हो गए और एकदम ढेर सारे पैसे आ जाएं वो DLC के लिए, ताकि उसे भी जब मैं स्टार्ट कर सकूँ तो आराम से खेल पाऊँ। Greetings. What do you need? How does life in Rat Eye suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us.
got for you. You'll love this. Look what I've got for you. You'll love this. Look what I've got for you. You'll love this. My respects to you. I'd like to discuss the price. Well, we can try. What do you say to this? That's still too much. Satisfied? That sounds pretty interesting. A little less, you'd be satisfied. Fine. Reasonable sum. Everything for the house. God. Humble greetings. How may I serve you? God save me. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. गरीब है अभी भाई रहने दो
What are you here for? I'd like to order something. And what is it you like? I've heard you have Hey. I'm sure you'll be extremely satisfied. May the Lord... Oh shit. बहर चोद 1 सेकंड के अंदर आवाज है। May the Lord watch over you. भाई क्या आवाज थी वो? व्हाट द फक? What do you want from me now? Can we do something about the price? Well, we can try it. Satisfied? That's still too much. Tough luck. क्या भिखारी है यार? Let's talk about the price. Well, we can try it. Satisfied? Less. That's a sum I can live with. The usual, or something special. Just a few small things. That's all for today. Here you are. Thanks. God be with you.
health to you. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. What about this? That's still too much. Is this enough? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Aye, that would do it. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Agree? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Finally, a reasonable sum. भाई ऐसे खेलते हैं गेम। God bless you. What troubles you? Take care.
अच्छा तो मैं उस बॉक्स में भी रखूंगा तो भी इस बॉक्स में आएगा। सही है सही है। Stop right there. I have to... What? Such are my orders. As you wish. What the fuck is this? All these things are stolen. You'll be leaving that here. Got it, laddie. Now you can enter. एक मिनट, मेरी चेस्ट गायब हो गई क्या? है तो
सेव भाईगा चोरी चकारी करनी पड़ती है, चोरी वोरी करके सब पैसा कमा लो। What do you need? What's life like? Good. Or it was till that refugees came. Still, better off here than most places.
Hey, you! Halt! चलो यार अब मैं चलता, आज की स्ट्रीम के लिए इतना ही। खेल लिया आज लंबा। बैंड ऑफ बास्टर्ड्स कर लिया, अब सर हैंड्स के पॉन का डीएलसी करूँगा एंड वो पैसा कलेक्ट कर ही रहा हूँ दूसरे के लिए। ऑटो वैसे हो जाएगा, इवेंचुअली मिल जाएगा पैसा। रैटे टर्नी में पार्ट लूँगा ना, अपने आप पैसा आएगा। Good night guys, thank you for joining.